حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر قال: رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ، فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लोग वज़ू के निशानात की वजह से क़यामत के दिन सफ़ेद पेशानी और सफ़ेद हाथ पाँव वालों की शक्ल में बुलाए जाएंगे। तो तुम में से जो कोई अपनी चमक बढ़ाना चाहता है तो वो बढ़ा ले, यानी वज़ू अच्छी तरह कर ले। सही बुखारी हदीस नंबर 136। Sahih Bukhari Hadith number 136 narrated Nu'aym al-Mujmir, once I went up the roof of the mosque, along with Abu Hurairah. He performed ablution and said, I heard the Prophet saying, on the day of resurrection, my followers will be called al-Ghurra al-Muhajjalin from the trace of ablution, and whoever can increase the area of his radiance should do so. That is by performing ablution regularly. Please subscribe this channel and press bell icon for receiving more videos like this.